According to ADA specification number 1, there are 3 most important properties by which we judge or assess the amalgam alloys, right? First, dimensional change. It should be dimensionally stable, obviously. Not too much expansion, not too much contraction. Otherwise, there are problems. Second, compressive strength. Adequate compressive strength honi chahiye. Third is the property of creep. And lastly, and not very important from the clinical perspective, but according to ADA specification number 1, वो ये 3 लिखता है. तभी मैंने इन 3 को highlight भी किया हुआ है और underline भी किया हुआ है. Bold में लिखा हुआ है, underline किया हुआ है. Corrosion is obviously another important clinical aspect that we deal with amalgams, right? But in terms of physical properties, by definition, these CCD. The mnemonic is CCD, Cafe Coffee Day. Cafe कॉफी डे. रट लीजिए. डी से डायमेंशनल स्टेबिलिटी, सी से कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, सी से क्रीप. ठीक है, ये 3 चीजें रट लीजिए. कहीं पे भी अमेलगम का लॉन्ग नोट आए, शॉर्ट नोट आए, दे टॉकिंग अबाउट प्रॉपर्टीज और वेरिएबल्स, एंड दीज 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं. डायमेंशनल स्टेबिलिटी. अब डायमेंशनल चेंज का कॉन्सेप्ट समझ लो. सबसे पहले तो डेफिनेशन समझ लो कि एट अ गिवन टेम्परेचर, that is at I think around 37 degrees Celsius, that's the temperature of the oral cavity, right? The dimensional change in either direction, that is chahe expand kare chahe contract kare, it should not be more than 15 to 20 micron per centimeter of the amalgam from 5 minutes to 24 hours from the start of trituration. मतलब आपने अमेलगम अलॉय लिया, मर्करी से मिक्स किया, ट्राइचुरेट किया. अब टाइम देख लीजिए, फ्रॉम 5 मिनट्स टू 24 आवर्स के बीच में इट शुड नॉट बी आइदर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, शुड नॉट बी मोर देन 15 to 20 माइक्रोन पर सेंटीमीटर. इज दैट फाइन? ये है एडीए स्पेसिफिकेशन नंबर 1 की डेफिनेशन. अगर कोई भी अमेलगम अलॉय इससे ज्यादा दिखाता है, आइदर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, it will not be marketed. That is the testing of amalgam that has to be done before it is introduced in the market. ठीक है, ठीक है जी. Now let us see what is the mechanism of dimensional change. ये बात कर ली ना हमने. ADA specification number 1, 15 micron to 20 micron at 37 degrees Celsius, 5 minutes to 24 hours after beginning of trituration. ठीक है जी. Now let us see the mechanism. बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से नोट करिए. द मोमेंट यू मिक्स सिल्वर टिन कॉपर जिंक या अमेलगम अलॉय विद मर्करी, मैट्रिक्स फेज स्टार्ट हो जाती है बननी. दैट इज गामा 1 गामा 2. गामा 1 के पर्सपेक्टिव समझ लेते हैं कि वही सबसे ज्यादा होती है, राइट? सो द मोमेंट आई मिक्स माय अमेलगम अलॉय विद मर्करी, आई एम फॉर्मिंग माय मैट्रिक्स फेजेस से गामा 1. now the volume of gamma 1 is obviously less because it's a solid ना. भाई solid crystal बन रहा है तो उसकी volume obviously अपने liquid counterpart से कम होगी. Understood? So the volume of gamma 1, that is silver mercury, is less than the liquid mercury and the solid amalgam alloy, right? So initially all these will show a contraction. ध्यान से सुनना, contraction. Now, as these crystals grow, they start impinging upon each other. They start pushing each other, right? All these gamma 1 crystals, they grow, they start pushing each other. Now, if there is sufficient mercury in the mix, then these growing crystals will, when they push each other, they will slide on that liquid mercury, on that extra mercury, right? And when they slide on that extra mercury, expansion will take place. After that, as the mercury keeps on getting consumed, खत्म हो रहा है mercury, right? Then these crystals, जो बिल्कुल बचा कुचा mercury होगा interstices में, the minor amounts of mercury that is present in the interstices between the matrix, between the newly formed matrix, वो use up हो जाएगा. That is being used up to form more gamma 1 crystals, right? But that is not sufficient mercury to allow slipping of the newly formed gamma 1 crystals. तो बेसिकली क्या हो रहा है, वो सारा mercury कंज्यूम हो जा रहा है, right? And new gamma 1 crystals or growth of those existing gamma 1 crystals is taking place, right?
तो अगेन वही कॉन्सेप्ट पहले वाला, फिर से कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, वो मर्करी यूज अप हो गया, जो गामा 1 क्रिस्टल बना उसका वॉल्यूम कम है देन द लिक्विड मर्करी दैट वाज लेफ्ट बिहाइंड, सो फाइनली अगेन देयर इज कॉन्ट्रैक्शन. So how do you remember this dimensional change? CEC. What is the mnemonic? Chief Election Commissioner. ये समझ आ गया सबको? रट लोगे सब लोग? Chief Election Commissioner. Contraction, expansion, contraction. Is this fine? Yes, sir. कोई है जिसको समझ नहीं आया? तुषिता, दुष्यंत, ऋतुस्मिता. So understood. Understood. Good. Now, next important point. Next important point. All the older amalgams, जो पुराने जमाने के amalgams होते थे जिसमें सिर्फ हम लेथ कट यूज करते थे, जिसमें मर्करी थोड़ा ज्यादा होता था, 50% होता था, राइट? इवन अप टू 54%. मर्करी सफिशिएंट है. तो जो सेकेंड स्टेज एक्सपेंशन की है वो कभी कभी प्रीडोमिनेट कर जाती थी. सो विद द रिजल्ट दैट ओल्डर अमेलगम्स, दूसरा हमारे पास मॉडर्न मैकेनिकल अमेलगमेटर्स नहीं थे. वी यूज्ड टू डू इट विद मोर्टार एंड पेसल. तो मर्करी जो है ना उसका एडिक्वेट यूटिलाइजेशन नहीं होता था, एक्सेस मर्करी रह जाता था सेट में. सो अल्टीमेटली एक्सपेंशन यूज्ड टू प्रीडोमिनेट एंड वी यूज्ड टू हैव नेट एक्सपेंशन. आजकल तो ओल्डर अमेलगम में नेट एक्सपेंशन दिखता था. देखो ये ऑर्डर सब में होगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सीईसी, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन. सवाल ये है व्हिच प्रीडोमिनेट्स. So in the older amalgam there would be net expansion. Modern amalgams we are using less amounts of, we are using unicomposition, spherical or admixed alloys, we are using less amounts of mercury, and whatever amount of mercury you're using like 42 to 45% की जो रेंज में हम यूज कर रहे हैं उसका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन हो रहा है with the help of mechanical amalgamators. You understand? So therefore nowadays the modern amalgams show नेट कॉन्ट्रैक्शन. ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरी प्रेजेंटेशन. कॉन्सेप्ट की बात हो गई, डेटा की बात हो गई, ठीक है, दोनों चीजें रटनी है. अच्छा, व्हाट आर द अदर वेरिएबल्स? अगर मैं अपने मैकेनिकल अमेलगमेटर में ट्राइचुरेशन टाइम थोड़ा ज्यादा कर दूं, आपने सबने अमेलगम यूज किया, देयर इज अ मैकेनिकल अमेलगमेटर, राइट? इट triturates or it mixes in a figure of 8 motion, right? It mixes the mercury with the amalgam alloy. अगर मैंने थोड़ा ज्यादा कर दिया तो क्या होगा? अगर ज्यादा कर दिया तो और ज्यादा अमेलगम अच्छे से यूज हो जाएगा, और ज्यादा मर्करी अच्छे से यूज हो जाएगा. So the net amount of mercury that is left is very less. So again contraction is favored. You understand? If I over triturate then the contraction is favored. Second, हमेशा जब भी ओवर ट्राइचुरेशन करते हैं the friction between the amalgam alloy powder particles generates heat and it decreases the working time. अब जब सारा का सारा सेटिंग जल्दी हो रहा है तो जो एक्सपेंशन का समय था वो सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है. So therefore again that facilitates, that's another reason why net contraction is facilitated. बात समझ रहे हो? Someone asks you over trituration, what is the result on dimensional stability? Net contraction is facilitated. Net contraction होती है. क्यों? Over trituration में जो mercury है वो ज्यादा अच्छे से use up हो गया, right? It is used up. So again that surplus mercury which is required for expansion, negative effect. Second, over trituration leads to generation of more heat. The setting reaction takes place faster. It affects the second phase more. That is the E phase. CEC का E phase. वो और कम हो गया. Net contraction. ठीक है? Is it clear? याद रहेगा सबको? Over trituration effect. Excellent. Very good. So this was a very important concept.